Welcome you guys to ZD's English Club. Let's practice some real English sentences. First sentence. कौन तुम्हें एबे भी मो ऊपर रागिछ? Are you still angry with me? Are you still angry with me? तुमर एठाको आसिबार 6 मास हो जाइछि. It's been 6 months you came here. It's been 6 months you came here. It has been को एठी it's been मोर लिखा जाइछि. तुम्हें मो सहित कथा हेबा को केबे भी चेष्टा करिनो. You never tried to talk to me. You never tried to talk to me. हमें भाई भाई. We are brothers. We are brothers. आमको परस्पर ध्यान रखिबा उचित. We are supposed to take care of each other. We are supposed to take care of each other. तुमरा मो सहित कथा न हेबार कारणरू. Since you don't talk to me. Since you don't talk to me. बहुत कम लोगों को लगे आमे भाई भाई. सो किछि लोगों को लगे बहुत कम लोगों को लगे जे आमे परस्पर भाई भाई. सो एठी कहबार उद्देश्य होउची जे हमको परस्पर सहित सबले कथा हेबार कथा जहा द्वारा कि समस्त जानिबे जे हां एमाने भाई भाई जेहेतु आमे कथा हेउने. सो सेति पे बहुत कम लोगों को लागुची जे आमे भाई भाई. Hardly anyone thinks that we are brothers. Hardly anyone thinks that we are brothers. तुम्हें भल भाव जान कहीं मु तुम सहित कथा हुएनी. You know very well why I don't talk to you. You know very well why I don't talk to you. तुम्हें जानिछ भी तुम्हें कौन करथिलो. Do you even know what you did? Do you even know what you did? तुम्हें यह बुझुन कहीं. Why don't you understand this? Why don't you understand this? मते तुमको केते थर कहबा को पड़िबो. How many times do I have to tell you? How many times do I have to tell you? एवं केते थर मते क्षमा मागिबा को पड़िबो. And how many times do I have to apologize? And how many times do I have to apologize? देखो यह गोटे दुर्घटना थिला. Look, it was an accident. Look, it was an accident. यह कहार दोष नथिला. It was nobody's fault. It was nobody's fault. यह ही सत. तुम्हें यह विश्वास करो कि न करो. It's the truth, whether you believe it or not. It's the truth, whether you believe it or not. यह तुम पर निर्भर करे. It's up to you. It's up to you. दयाकरी तुम्हें मो सहित जुक्ति करबा बंद करिवो कि. Will you please stop arguing with me? Will you please stop arguing with me? जेमती तुम्हें देखि पारो मु टिके व्यस्त अछि. सपोज आमे जेतलो किछि काम करूछे एवं केही जण हम किछि कहउचंती. सो सेटा हम कहउछे जेमती तुम्हें देखि पारो बा जेमती तुम्हें देखुचो जे मु टिके व्यस्त अछि. ओके सो सेठी एमती कहबा. As you can see I'm kind of busy. As you can see I'm kind of busy. तुम्हें केबे भी बुझिबनी मु तुमको केते भल पाए. You will never understand how much I love you. You will never understand how much I love you. किछि मुहूर्त पई मते लागिला से मो सामने रे छिड़ा होइतिला. For a moment I thought she was standing in front of me. For a moment I thought she was standing in front of me.
कौन तुम केबे भी ठीक समय आसी पारुनो? कैन टू एवर कम ऑन टाइम? कैन टू एवर कम ऑन टाइम? मु कथा देउछि आउ विलंब हेबिनी। आई प्रॉमिस आई वोंट बी लेट अगेन। आई प्रॉमिस आई वोंट बी लेट अगेन। राज केउठी? वेयर इज राज? वेयर इज राज? से बोधवे एबे भी सोईछि। ही इज प्रोबेबली स्टिल स्लीपिंग। ही इज प्रोबेबली स्टिल स्लीपिंग। मु तांको ए पर्यंत उठेनी। आई डिडंट गेट हिम ऑफ इट। आई डिडंट गेट हिम ऑफ इट। तुमको देखिबार अछि से उठलानी कि? यू हैव टू मेक श्योर ही इज ऑफ। यू हैव टू मेक श्योर ही इज ऑफ। तुम्हें कहीं तांको उठाउन? वाई डोंट यू वेक हिम ऑफ? वाई डोंट यू वेक हिम ऑफ? मु देखली से ता रूम रे नहीं। आई लुक्ड ही इज नॉट इन हिज रूम। आई लुक्ड ही इज नॉट इन हिज रूम। कल रात्रे से घर को आसीथिला ना नहीं? डिड ही कम होम लास्ट नाइट और नॉट? Did he come home last night or not? मु जानिनी, मु एठी नथिली। I don't know, I wasn't here. I don't know, I wasn't here. काली रात्रे बहुत देरी रे मु घरे पहुंचली। I got home pretty late last night. I got home pretty late last night. So that's it guys. Thank you so much for watching. Please like the video if you find it helpful and subscribe the channel for more such interesting videos and keep practicing these daily use English speaking sentences. Thank you and take care. Bye.